हो गया बहुत प्रॉब्लम है भाई 3-4 बोला देगा कौन सा बार बता रहे थे मेरी इसका पिछले मैं कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री था आज मैं 2-3 टाइम पड़ची ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ फेस 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರ ಕಡೆ ಕಾರ್ ಇರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಾವ ನಿಮಿಷ ತಾಳು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಊಟ ಯಾರು ಕೂಡ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या सर यहाँ पे देखो हेलो मैडम उसका मुंह यहीं कुछ तो नहीं है माता की भारत माता की जय नरेंद्र मोदी जी ಅವರಿಗೆ जय भारत माता की जय भारत माता की जय ओ मैडम हेलो हेलो बस दिगंबर जी नहीं दिख रहे अच्छा सब बराबर है सही है ना हाँ दिगंबर दिखना चाहिए हेलो मैडम ओके मैडम मार के हटिए सर यहाँ पे हाँ थैंक यू हाँ तो हटिए मैडम मैडम तुम्हारा ये मत करो तुम्हारा ये आएगा वो छुपेगा वरना पोलादी कसा मागता तुमच्याकडे या समयाची तुम्ही नोंद बहुत धन्यवाद। आज इस सभा में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्त्री पुरुष सभी हैं, यात्री कर तो है ही, लेकिन जब किसी सभा में नम्र शालीन और सौहार्दपूर्ण मार्गदर्शन करने वाली व्यक्ति रहती है और वो भी अतिथि बनकर, तब उस सभा की शोभा और भी बढ़ जाती है। बस इसी आशीर्वाद की कामना करते हुए और मार्गदर्शन की और भी कामना करते हुए, क्योंकि हमारा सफर जो है मुझे मालूम है क्या 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 आया था मुझे बताया मुझे ये सब भी नहीं बताया नहीं कौन दिए पैसेंजर किधर बैठते वो बताया आपका दुकान सब भी मुझे नहीं दिस इज लाइक ए लॉन्च
एयरपोर्ट पे अच्छा है, अच्छा है, 50 रुपीज दिया, थोड़ा कम कीजिए अम्मा, थोड़ा कम कीजिए. ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾರಪ್ಪ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಷ್ಟು ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ मिनिस्टर ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿವ್ರು ನೀವು? ಫ್ರಮ್ नागपुर. वेरी गुड, थैंक यू. हाँ हाँ हाँ, हमारा नेता अम्मा. बहुत अच्छी कंफर्ट और लग्जरी है सर. No problem ना? एब्सोल्युटली बहुत पैसा दिया तो भी कुछ भी है नहीं. एंड एकदम रीजनेबल. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ बड़ा पांग सर. बड़ा ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कोई बात नहीं सर, आपको देख लिया 4 घंटा है. Stand our leader, Sri Digambar Kamath, Honorable Minister, PWD, Courts and Legal, Metrology, Sri Raju Mishra ji, Director of Konkan Railways, and their sister Srimati Asha Shetty, RRM Konkan Railways, officers, staff members, and electrical media, and media friends, सबको मेरा नमस्कार. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and guidance of our Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Indian Railways is developed at a rapid speed. Modi ji has described Indian Railway as the growth of engine of modern India. It is our vision to achieve Vikasit Bharat 2047. Railway is an important pillar of Vikasit Bharat. In 2026-27, railway budget in Goa 515 crores. During last year, 2014 to 2026, 24 kilometer railway line was completed in Goa. 164 kilometer electrification is already completed. 12 ROB and RUB were completed 150 crores ka. At present, 2 bays of Vande Bharat Express are being operated in the state. In the last 2 years, throughout India, more than 2,000 trains service have been regularized. In all India, 200 trains are regularized. 30% चेयर रही था, इसे रेगुलराइज कर को वो ट्रेन आपको भी बेनिफिट हो रही. In Goa from 24-26, 4 trains are started. 4 special trains are regularized. गोवा में 4 trains अभी started है. Another 4 trains अभी regularized कर को आपको 8 train हो गया. Further 3 ROB at the cost of 150 crores being sanctioned. In entire country, 1,337 stations are being redeveloped as Amrut station. Ordinary railway passenger will also get world-class facilities. In Goa state, Madagam and Savarde, Vasco da Gama station are being redeveloped. Savarde, Madagam master plan are under preparation. Savarde 515.6 crores के अभी काम चल रहे. वास्को डी गामा 50 crores का अभी काम चल रहे, वो भी जून 27 को कंप्लीट हो रहे. बाद में सावरडे का अगस्त 26 में वो कंप्लीट होगा. पब्लिक को में एक समर्पण करने का चिंता कर रहे हैं. और beloved Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji has become the largest serving elected Prime Minister of India. जोर से आप लोग स्टार्ट दे दिए. Last 12 years of our government has worked on the principle of Vishwas, Vikas and Kalyan. Every sectors of our nation is developed. Under the strong leadership of Modi ji, we are working 24/7
fulfill the vision of Vikashit Bharat. Today, Belgaum and Karwar special train being regularized. Ticket fare will be reduced 30%. Ticket fare will be reduced 30%. This will help common people. Lot of daily wages workers, students, even tourists will be benefited. Once again, I am happy to that our senior leader, Sri Digambar Kamath, is joined today. It is a privilege to my स्वागत करना, बाद में मैं धन्यवाद भी देता हूँ. Our double engine government will be work together to improve the rail infrastructure and connectivity. Konkan Railway is developing executive lounge and many passenger communities. I congratulate our officers as well as दिगंबर कामत जी. मेरा एक ही निवेदन की विनती है, बाद में ट्रेन को मैं फ्लैगिंग करने का बाद में 10-15 मिनट में गोवा स्टेट का, बाद में देश का, मोदी जी का 12 पक्ष का क्या क्या काम हो रहे, कैसा काम हो रहे, बाद में विकसित भारत 2047 में कैसा करने का, बाद में ऑल सेक्टर में क्या क्या लेने का जब मौका मिल रही सबको भी आपको बताना है कि ट्रेन का फ्लैगिंग करने के बाद मेरा एक ही विनती है, देश में डेवलपमेंट का एक विजन देखो. 12 ईयर्स में 50% से क्या कुछ भी नहीं हुआ था, वो सभी फुलफिल करने का हमारा नेता मोदी जी का नाम बहुत बहुत बड़ा है. मैं अभी क्या अभी बेड़गाम से कारवार का ये ट्रेन का मैं फ्लैगिंग कर को ये बहुत खुशी है. बाद में 30% रेट भी कम है, कॉमन पैसेंजर पे उसका बेनिफिट्स भी हो रहे. नॉट ओनली दिस वन ट्रेन. In Karnataka, there are 37 trains that are regularized. 37 trains, I think 37. 37 trains we are regularizing. This is the मोदी जी का ड्रीम है, मोदी जी का विकास उसका संकल्प है, मोदी जी का संदेश भी है, मोदी का चिंता है उसका भारत देश का कैसा करने का सब है. इसलिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देखो. अभी फ्लैग करने के बाद में मैं प्रेस मीट भी कर रहा हूँ. आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. भारत माता की. Of Konkan Railway Corporation, we have Ajit Patwardhan, Civil Service Officer of Goa Government, SP Prabhu Desai, and all the staff of Konkan Railway Corporation, friends, ladies and gentlemen. I am happy, very happy that another milestone is being added to Madgaon Railway Station, and that is flagging of this train from today, which goes from Margaon to Karwar, which is a very, very important link between Goa and Karnataka. Whoever wants to go to other side, Karwar is the main station, so they can travel from Margaon to Karwar in a very short time. Friends, railways have seen a total change. What was railway 15 years before Prime Minister Narendra Modi took over the leadership of this country? Nobody could imagine they could ever see a train like Vande Bharat, Namo Bharat traveling on the Indian rails and trying to cover the distance with all the better facilities. In fact, I traveled by Vande Bharat from Madgaon to Mangalore. आणि हांव मँगलोर गेलो, म्हाका दिसलें की हांव प्लेना भितर वचूं आसा. लंच, डिनर, खावपाक सारकें एअर हॉस्टेसी भशेन भितर स्टुअर्ड्स, इतली बेस्ट ट्रेन. जो गरीब मनीस पयलीं ट्रेनीन वतालो तो कसो वतालो तें ताका विचारा, आनी जो वंदे भारतान गेला ताका विचारा तुमकां डिफरन्स मेळटा काय ना, डिफरन्स दिसता काय ना. दिस इज गुड गव्हर्नन्स which Prime Minister Narendra Modi has implemented in our country. मडगांव स्टेशनाचेर आमच्या नायकान लॉन्च केला, फर्स्ट क्लास लॉन्च. एअरपोर्टाचेर बी लॉन्च आसा तशें लॉन्च आसा. लोक हांगा येतात, न्हिदतात, न्हातात, खातात, डायरेक्ट ट्रेनीर चल्ले. हे लॉन्च मडगांव स्टेशनाचेर जावपाक शकतालें अशें केन्ना कोणें चिंतूं नासलें. आनी म्हणून रेल्वेचो प्रवास हो सामान्य लोक करतात. The common people who travel by train, and Prime Minister Narendra Modi's dream is to see
that common people feels happy in his country. I am very happy that we have Mr. G. Somanna, who is a very simple man, is a very senior man. He is the Minister of State for Railways, and Railways is performing extremely well. They have reached everywhere. In fact, the railway network in Akhya Jagan, India's rail network is one of the biggest network of railway in the entire world. And I am happy that railways are doing very well. आता थोड्या तेंपान आमकां सगळ्यांक दिसपाचें आसा की बुलेट ट्रेन रनिंग फ्रॉम मुंबय टू अहमदाबाद ज्या दिसा बुलेट ट्रेन चालू जातली त्या दिसा लोक म्हणटले जपान गेले चायना गेली इंडियाची कापासात पळया सी द पॉवर ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी who has declared that India will have a bullet train from Bombay to Ahmedabad and that dream is going to come true very soon. म्हणून काम रेल्वे मिनिस्टरांचे अभिनंदन करता की बरें काम ताणें केलें. रेल्वे आमी खुबश्यो मागण्यो केल्यो खुबश्यो मागण्यो पूर्ण जाल्यो आनी आतां आख्या सायडीन एक नवो प्लॅन तयार जाल्लो आसा. तो ज्या दिसा जातलो चालू काम करपाचें ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर एग्री जाला, कमिटी अपॉयंट केल्या, कमिटीच्यो मिटींग जाल्या, थोड्या दिसां भितर तें काम सुरू जातलें. तें काम सुरू जातकीर आख्या सायड will also be transformed. It will be like this station. It अत्यंत बरें थंयसर मडगांवचे जंक्शन is going to be the best junction on the Konkani route. I am very happy for that. आणि हांव मना कडेन मागता की तुमी आज पर्यंत असो रेल्वेक सहकार्य दिला. I have been associated with railways Konkani right from beginning. When Mr. Sridhar was the CMD of Konkani Railway Corporation. Because thanks to Sridhar, when we could construct a railway overbridge here on this junction, where he said that land will be given by Konkani Railway Corporation. Then the minister said 50% will be borne by the state government, 50% will be borne by the Konkani Railway Corporation. That's one of the best cities, though it will not stay. It is best safe bridge. And then because it is passing to the railway corporation. So we have good relationship with Konkani Railway Corporation. We have always supported them in all their efforts, and I hope the number of trains running from here is not less than 60, 70. 75 trains are running on this station. Very, very important function, and I am happy that they have decided that this will be developed. This will benefit all the people of Assam. I want to congratulate the Railway Ministry and officers and CMD and the staff of the Konkani Corporation and the Minister of State, Shri Somanna, please convey my best wishes to your cabinet minister also, and wish you all the best. I hope railways reach at the stage where everybody wants to see the railways reach the stage where people will be happy, common man's family will be happy. Wish you all the best and support Prime Minister's Vikasit Bharat 2047. That dream has to be fulfilled. Railway can fulfill it. Jai Hind, Jai Go.